Congress is now taking credit for the nomination of Sachin Tendulkar as a Rajya Sabha MP. The President approved his nomination yesterday, as we know. The Congress's Sanjay Nirupam now says Sachin is welcome to join the party. Sachin accepted the offer after a meeting with Sonia Gandhi in the capital yesterday. The centre had recommended his name along with 3 others. Questions are now being raised about the timing of that announcement. Is it a calculated move by the Congress to deflect attention from the Bofors spotlight? After all, it came at a time when the party and its President Sonia Gandhi were being ambushed by the opposition on the floor of the House. Sources say that the Congress is hoping that this feel-good news will detract attention and that Rajiv Shukla and Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan were the ones who convinced Sachin to take up this offer. Sachin Tendulkar is one of the greatest cricketers of our country, and there are 3 vacancies in Rajya Sabha in the nomination quota. So the government was looking for some great personalities to fill up the vacancies. In the meantime, the person like Sachin Tendulkar, Rekha, Anu Aga, that came up. And that is why when Sachin Tendulkar met the Congress president, and the party and the government decided that yes, he will be the perfect person to be nominated. It is up to 100% Sachin Tendulkar to which party he should join. It is to be decided by him. One. Second point, if he opts for Congress party, we will basically welcome it more than anything. We don't want to do any politics on this issue. If somebody is interested in joining Congress party or getting attached to Congress party, nothing wrong with it. It should be welcomed. आता सचिन आणि काँग्रेस यांचा तो प्रश्न मी काय सांगू? इस बात की हमें बहुत खुशी है और उन्हें बहुत बधाई। बहुत ही हर तरह से योग्य व्यक्ति हैं और अपनी जिम्मेदारी को हम सब ने देखा, पूरे देश ने, कि कितनी योग्यता से निभाते हैं। उनको बनाया गया, नॉमिनेशन किया गया है, उससे मैं सहमत हूँ। अब वो किस पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई उसमें निर्भर करता है। हम जरूर खुश हूँ। इट इज ए रियल रिकॉग्निशन ऑफ ए स्पोर्ट्स टैलेंट, लेकिन सौरभ को भी लेना चाहिए था व्हेन ही वाज एट द टॉप फॉर्म। क्रिकेट छोड़ करके भी और बहुत स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन है जिनको बारे में सरकार को सोचना जरूरी है। इट शुड नॉट बी लुक्ड अपॉन एज ए पेट्रोनाइजेशन ऑफ क्रिकेट। Selection of Sachin Tendulkar is no doubt is one of the finest decision. The young generation of the country as such will be inspired. Whole country will be happy to see that a person like Sachin Tendulkar, who has been even proposed to be offered with Bharat Ratna Award, at least this president's nominee is justified. सचिन तेंदुलकर देश के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिस पर हम सबों को गर्व है, बट इफ ही इज बीइंग नॉमिनेटेड, surely one would expect to devote some time for the parliament. राज्यसभा में कलाकार आते हैं, स्पोर्ट्समैन आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन सचिन जो है, लोग उनको भारत रत्न देखना चाहते हैं कि भारत रत्न है, चर्चा हो रही है, उसके लिए नियम कानून बदले हैं, फिर भी सरकार उस बारे में क्यों पीछे हट रही है? हमारी मांग है सबसे पहले उनको भारत रत्न दीजिए, राज्यसभा में हम उनका स्वागत ही करेंगे।